Okay. Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha and today we'll be continuing with the back exercises of understanding marginalization. तो उस दिन हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन वाला चैप्टर जो था उसे कंप्लीट कर लिया था, राइट? इफ यू हैवंट वॉच्ड द लेक्चर देन डू वॉच इट. हमने उसमें काफी सारी चीजें कवर करी थी, ठीक है? राइट फ्रॉम SC ST. So right from SC ST to Muslims and how the marginalized section is, what rights do they have. उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी पे हमने मेजर एक जो कवर किया था चैप्टर को वो किया था. Now before starting with the question answers, let's have a quick look at the glossary. ठीक है, ग्लॉसरी में क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं which we must remember. So let's start. सबसे पहला है डिस्प्लेस, जिसका मतलब क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर्स टू पीपल जिन्हें जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया जाता है बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. और ये किसके साथ हुआ था? ये हुआ था ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, ठीक है? उसके बाद आता है हायरार्की. हायरार्की क्या होता है? एक ग्रेडेड सिस्टम होता है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और थिंग्स. यूजुअली पर्सन एट द बॉटम ऑफ हायरार्की वो होते हैं जिनके पास सबसे कम पावर होती है. जैसे हमारे में क्या है? कास्ट सिस्टम है. इट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो जो दलित, जो शूद्र सेक्शन है, जो शूद्र कास्ट है, उसके पास लीस्ट पावर होती है अगर हम सोशल मैनर में देखें, हायरार्की के तरीके से देखें तो. उसके बाद आता है ghettoization. ये क्या होता है? A ghetto is an area or locality that is populated largely by members of a particular community. मतलब वहां पे एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज्यादा रह रहे हैं. In comparison to any other community, ठीक है? Ghettoization refers to process that leads to such a situation. This may occur due to various social, cultural, and economic reasons. Fear and hostility may also compel a community to group together as they feel more secure living amongst their own. Often a ghettoized community has a few options of moving out, which may lead to them becoming alienated from the rest of the society. मतलब पूरी एक जो कम्युनिटी है वो डर के किसी की वजह से एक जगह रह रही है, क्योंकि अगर सारी कम्युनिटी एक जैसी है, वो एक जगह रहेंगे तो वहां पे उन्हें बेटर फील होगा, उन्हें सिक्योर फील होगा इन कंपैरिजन टू अलग रहना. वैसे ही आते हैं हम अब मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम का क्या मतलब होगा? लिटरली दिस रेफर्स टू मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, ठीक है? जैसे अगर हम लिटरल मीनिंग देखें इसका तो क्या है कि करंट या फिर जो स्ट्रीम होती है वो जैसे चल रही है उसको रेफर करता है. पर इस चैप्टर में मेन स्ट्रीम का क्या मतलब था? इट इज यूज्ड टू रेफर इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट in which customs and practices that are followed are those of the dominant community. ठीक है? जो कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है उन्हीं के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है. In connection with this, जो मेन स्ट्रीम है, it is also used to refer to those people or communities that are considered to be center of a society, that is often the powerful or dominant group. ठीक है? जो पावरफुल या फिर जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं वो उनके अगल बगल ही जो सोसाइटी है वो रिवॉल्व कर रही होती है. नाउ मिलिटराइज्ड का क्या मतलब होगा? जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस है. ये कहाँ पे हमने सबसे ज्यादा देखा है? नॉर्थ ईस्ट में. उसके बाद मैलनरिश्ड, जो पर्सन एडिकेट न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल रहा है फूड से. तो ये थे ग्लॉसरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर. Okay, just a second. ओके, तो हमारे पहले दो क्वेश्चंस क्या थे?
Write in your own words 2 or more sentences of what you understand by the word marginalization. और उसके बाद हमें 2 reasons list करने हैं that why Adivasis are becoming increasingly marginalized. Okay. Okay. So let us start. Let me switch my screen to the question answer one so that you can see the answers. Just a second. Okay. So now I hope it is visible. It took a bit of time. I'm really sorry for it. Okay. So जल्दी से start करते हैं कि marginalization क्या होता है. हम अगर आपको बोला जाए कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है marginalization का मतलब, तो आप क्या लिखेंगे? ओके. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. राइट इन योर ओन वर्ड 2 or more sentences of what you understand by the word marginalization. Okay. Marginalization is a social process of being confined to lower social standing. ठीक है कि मतलब आप काफी, अगर हम सोसाइटी के तरीके से देखें तो काफी इट इज कंसिडर्ड कि भैया बहुत ज्यादा नीचे स्टैंड करते हैं. लाइक मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को दिस इज व्हाट पीपल मेक देम बिलीव. राइट. ओके. नाउ people who belong to this group are generally denied the right, generally denied the fundamental rights they are generally denied the fundamental rights okay
which contributes in lowering of their economic and social status. Okay. A marginalized section often lack rights to equal opportunity and development. Okay, so we have written our understanding of marginalized section. Now let's move to question number 2. That is, list 2 reasons why Adivasis are becoming increasingly marginalized. Reasons behind Adivasis becoming increasingly marginalized are पहला रीजन क्या हो जाएगा हमारा? Changes in forest laws have denied and deprived the tribals of access to the forest produce. Second, the construction of factories and other projects in tribal areas opposed displacement. Remember, we read this word in the glossary section. Displacement of a large number of tribal population, mainly in search of livelihood. ओके, तो ये दोनों हमारे क्वेश्चंस हो गए. अब देखते हैं जल्दी से हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या था. जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इट सेज प्रिंट
You can see the third question. It says write one reason why do you think Constitution safeguards to protect minority communities? And the fourth question says reread section on minority and marginalization. What do you understand by the term minority? Okay. So let's start writing the third one. That is one reason why you think sorry. So the Constitution safeguards to protect minority communities are extremely necessary in order to save these communities from any form of discrimination. Okay? Okay. ठीक है? These constitutional provisions also protect them from any sort of cultural domination from the majority community. Okay, now let's come to question 4. That is, first of all, let's reread question 3. That write one reason why you think the Constitution's safeguards to protect minority communities are very important. The Constitution's safeguards to protect minority communities are extremely necessary in order to save these communities from any form of discrimination. These constitutional provisions also protect them from any sort of cultural domination from the majority community. Okay? Now, the fourth question is reread the section of minorities and marginalization. What do you understand by the term minority? So let's start with this. A minority community is a community that is
numerically small in relation to the rest of the population. ओके, तो वो कम्युनिटी जो नंबर में कम हो वही उसे हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, बाकी कम्युनिटीज के रिलेशन में. ओके, नाउ a particular religious group has a comparatively low percentage in population as compared to those of a major religious section. तो वापस से एक बार इसे पढ़ते हैं. A minority community is a community that is numerically small in relation to the rest of the population. A particular religious group has a comparatively low percentage in population as to those of a major religious section. तो अभी तक हमने ये देखा कि minority community क्या होती है. ठीक है, all these features contributes in recognizing a particular community as minority. तो ये हमने डिफाइन करा व्हाट इज माइनॉरिटी. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ये क्या था कि सेक्शन ऑन माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन वो क्या है एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, राइट. तो माइनॉरिटी एक्सप्लेन करके उस पे चलते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides special status and safeguards the rights of the minority and the marginalized. Okay, it safeguards the it provides a special status. आपने देखा होगा ना कि कहीं कहीं माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलता है, मार्जिनलाइज सेक्शन को रिजर्वेशन मिलता है. तो एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें और इनके राइट्स को सेफगार्ड भी कर रखा है. As a part of fundamental rights, the Constitution ensures that these communities
do not face any discrimination and are provided equal opportunities for cultural, social, and economic betterment. Okay, so Indian Constitution provides special status and safeguards the right of the minority and marginalized. As a part of fundamental rights, the Constitution ensures that these communities do not face any discrimination and are provided equal opportunities for cultural, social, and economic betterment. Muslim, Sikhs, Christians, Jain, etc. are considered minority. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारा वो भी एंड हो चुका है. हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि माइनॉरिटी क्या होता है, एंड देन हमने डिस्कस किया कि माइनॉरिटी को किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेफगार्ड कर रखा है, राइट? Now you can see the other question. That is, you are participating in a debate where you have to provide reasons to support the following statement that Muslims are marginalized community. अब जो हमें डेटा चैप्टर में दिया था उससे हमें लिस्ट करने हैं 2 रीजन. तो जल्दी से चैप्टर के डेटा पे एक बार जाते हैं कि हमें चैप्टर में क्या डेटा दिया गया था. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनका लिटरेसी रेट, सबसे पहले लेट्स चेक. लिटरेसी रेट कितना है? 57. ठीक है. क्रिश्चियंस का सबसे हाईएस्ट है 74, बुद्धिस्ट का, जैन का सबसे हाईएस्ट हम देख सकते हैं ना 86. तो सबसे लोएस्ट इनका लिटरेसी रेट है इन कंपैरिजन टू बाकी. तो इस चार्ट को हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने आंसर पे ताकि हमें बार बार वापस ना आना पड़े, एंड वी कैन डिस्कस एंड राइट इट देयर. अब आते हैं दूसरे पे. उसके बाद हम देख सकते हैं कि कितने जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कितने लोगों को यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज मिल रही है. That data is also covered in the chapter जिसको हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद again we have the basic amenities जिसको हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट होती हैं उसमें बताया गया है कि बेसिक एमिनिटीज. तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हाँ, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है आपके लिए तीनों, जिससे हमें इजी हो आंसर को फॉर्म करना, बार बार पीछे ना जाना पड़े देखने के लिए. तो देखिए यहाँ पे मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, हमें ये डेटा यूज करते हुए प्रूव करना है. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लिटरेसी रेट प्रूव करना. किसी भी अगर आपको कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन दिखाना है सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? उसमें से कितने पढ़े लिखे लोग हैं, राइट? तो
the literacy rate of the Muslim community is, how much was the literacy rate? 57%, which is lowest comparing to all other communities. Okay, सेकेंड, अगर हम बात करें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, तो उसमें अगर आप आईएएस देखें तो सिर्फ 3, आईपीएस देखें तो 4, आईएफएस देखें तो 1.8। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और कितना कम है। तो सेकेंड अगर हम देखें, इफ वी कंसिडर the data provided for public services Muslims are only 3% of the Indian administrative services, that is the IAS. The Indian Administrative Services. The less participation and the bottom ranking of Muslim community surely proves that, क्या प्रूव करना था हमें, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, दैट मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप इसको कॉमास में लिखेंगे, दैट मुस्लिम्स are a marginalized community. Okay, so we have completed question number 5 as well. Now let's move to the question number 6. It's a pretty big chapter. No worries, we'll continue. But now the theoretical ones are over. They are mainly the, let's say, our analysis one. So we'll do them later. Let's first move to the 8th question. That is, would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? Because that is an important question. उसके बाद हम जो हमारा अपनी analysis वाला है वो discuss करेंगे, ठीक है? बिकॉज उसमें इतने प्रॉपर आंसर की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज, वुड यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड? तो सबसे पहले आपसे पूछा है वुड यू, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, दैट इज हाउ वी राइट। यू विल राइट यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट that economic marginalization
and social marginalization are interlinked. ठीक है? How? Social marginalization, okay? Social marginalization forces आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम हमने पढ़ा था ग्लॉसरी में, याद है आपको? मेन स्ट्रीम resulting in that particular community I wrote it wrong, just a second. Resulting in that particular community being lacked of proper skill development and education. Okay, now which again results in them being unable to access quality health care which in turn means that children of a marginalized section, children of a marginalized community do not develop into a stable adult. They are financially unstable, which makes them again fall into the economic marginalization. Or we can rather write which makes them again fall into the economically marginalized section.
Okay. This is a vicious cycle that continues unless is broken. If a person is socially marginalized, as a part of the cycle, economic marginalization economic marginalization follows. ठीक है, अब रीड कर लेते हैं इस आंसर को. Yes, I agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked. Social marginalization for us is a social group out of the mainstream. Sorry, it is, I guess it is a mistake. It is forces. Just a second, I'll rub it. So social marginalization forces a social group out of the mainstream, resulting in that particular community being lacked of proper skill development and education, which again results in them being unable to access quality healthcare, which in turn means that children of a marginalized section do not develop into stable adults. They are financially unstable, which makes them again fall into the economic marginalized section. This is a vicious cycle that continues unless it's broken. If a person is socially marginalized as a part of the cycle, economic marginalization follows. So it is a cycle. ठीक है, आप socially marginalized हैं तो कहीं ना कहीं आप economically marginalized भी हो जाएंगे. So it is very very difficult to get out of this cycle. Okay. Now I told you about those two questions, right? जिसमें हमें ऐसे normal analysis वाले questions थे वो. तो अब एक नजर उन पे डालते हैं जल्दी से. इसमें से देखते हैं कि क्या कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा सकता है. फाइन. So there we have the two questions. Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend and she remarks, "Look at those tribals, they are so exotic. They are so exotic and they seem to be dancing all the time. List three things that you would tell her about the lives of Adivasis in India." तो आपको कौन सी तीन चीजें हैं जो बताएंगे? सबसे पहली चीज, they are Adivasis have the best knowledge about the forest. या आप बताएंगे. सेकेंड आप क्या बता सकते हैं? That they practiced shifting cultivation they have their own language and many are safeguarded by the Indian Constitution and many are recognized by the Indian
constitution. Now you can elaborate these points, of course, कि किस तरह से, they have better knowledge about the forest, they were nomads, hunters and gatherers. But then they started shifting cultivation, how in the pre-colonial ages they were flourishing. But then when India became a colony of the Britishers, at that time Britishers started capturing the forests, and the tribals were forced to leave. And even today for the development programs, they have to leave their own homes. So is that you can write. Now let's come to the seventh question, that is, in the storyboard you read about how Helen hopes to make a voice movie on the Adivasi story. Can you help her developing a short story on Adivasis? खैर इसको homework होना चाहिए. We are the young brains, right? So you must have very, very good ideas for the movie. And I hope someday some of you may, fight against the stereotype that is created for the tribals and portray. Just वैसे अगर आप लोगों ने RRR देखी होगी, जिसका गाना, जिसके सॉन्ग ने won Oscar, तो RRR अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपने हिंट देखा है ट्राइबल कल्चर का. But I hope someday somebody makes a movie that is a lot, more, let's say, elaborative about the tribal culture, ताकि stereotypes खत्म हो और हमें पता चले कि this is a particular community which do not deserve to be, considered a marginalized, that do not deserve to be marginalized. It also should have all the rights to develop. ठीक है? And with this, we complete with our today's class. Thank you very much. I hope you stay connected to our channel. We have live on other channels also continuously, so you can watch as per your preferences. Thank you for watching and stay connected to our channel.